हेलो एवरीवन, राधे राधे। काजल जी, हेलो रूपाली जी, दीपिका जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये हर रोज ना इधर उधर शेयर करने में, व्हाट्सएप पे शेयर करने में ही 2-3 मिनट्स हो जाता है, बट आई होप यू डोंट माइंड। ठीक है। जय श्री कृष्णा प्रियंका जी। Today we'll start with this ball, okay? So for that, we need to take white. Namaste Suma ji, namaste. Radhe Radhe. Okay, we need to take pure white. यहाँ पे वैसे white है मेरे पास, but it is little bit of yellowish, so I am not taking this one. We have to take pure white here, okay? Okay. Good morning, Lindsay. Good morning. See here in between here, like, okay, in this area it is pure white. Why? Because light is hitting on this area, okay? And here we have to give the shadow. Because of the grapes we can see the shadow on this part, and because of this orange we can see shadow on this part, okay? But in between it is highlighted, so we have to give pure white around this flower, okay? And this is like bowl थोड़ा सा ऐसे ऐसे bend होता है ना, so we can see the bowl is little bent like this, मतलब ऐसे होता है ना, so we have to give shadow on this part also, okay? Good morning Simi ji, good morning. So here it is highlighted, okay? And here it is the shadow of the grapes, and here it is shadow of the orange, and here the bowl is little bent, so we have to give shadow here also. And here it is like ये पीछे का होता है ना, this is kind of stand is little bit backward, so here also we have to give the shadow, and on some parts we have to give the highlight, okay? So we'll start with pure white, okay? So I'm taking fresh brush, okay? And here we need to take round brush, I guess. Yeah, थोड़ा सा इधर उधर जाने के लिए we need to take round brush, but wherever I can use flat brush, let me use that, and we'll start with round brush, okay? Yeah. Here in between it is white, okay? And if we go on those lines, it doesn't matter, as it is we have to do those lines with blue color, okay? So I'm not concentrating more on, like, if we go on white, those yellow lines, it doesn't matter, okay? So in between we have to give pure white, okay? यहाँ पे हम around the flower we are giving pure white, okay? Because white is hitting in this area, okay? यहाँ पे white hit कर रहा है, that's why we are giving pure white around this flower. Good morning Geeta ji, Radhe Radhe, thank you for joining. मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ कैमरा को, so that you can see, otherwise oh,
ओके क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा था ना उस पे कमेंट्स के ऊपर. नाउ इट इज विजिबल, राइट? ओके. या गुड मॉर्निंग वीना जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. राधे राधे. गुड मॉर्निंग गीता जी, गुड मॉर्निंग. Okay, only this part is pure white. Okay, so around this flower. Okay, and after that we need to add shadow color. I will just show it to you. ठीक है. Good morning, Navneet ji. Good morning. Yeah, and I'm going to give this pure white here also. ठीक है. Here on the corner, and we have here in between. ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है because it is white on white canvas, but the moment we add shadows you will come to know. Okay. Yeah. See, we have to take Persian blue and black. Okay, here I have Persian blue and I need to take black. I will take black. We have black here, but वो थोड़ा सा dry हो गया है, so I'll take black. And whenever you are mixing color, take one waste brush. Okay, so that's why don't throw your brushes, keep it for mixing. कोई भी एक खराब ब्रश होगा ना, so you can use those brushes for mixing. Good morning Prinsley ji, good morning. Okay, so here I'm adding little bit of Persian blue, just little bit. Okay, you have to take very less Persian blue and we have to take very less black. I'm taking black also. Okay, and we'll mix it. Okay, we have bluish shadow. Okay, and we need one grayish shadow. So here I am taking little bit more black and we are mixing this one. Okay, this is proper gray. We can add a little bit more. Can you see the difference? This is proper gray, this is bluish gray, and this is pure white. Okay, so I'm adding here. Okay, but this is little bit more gray. We are taking gray. How do we make gray? Black and white. Okay, take round brushes. Okay, good morning Shubhangi ji, good morning. Yeah, we can work with flat brush only. Yeah, यहाँ पे हम we are adding gray here. Okay,
Okay, and यहाँ पे we have to blend it. For that we'll take another brush because हमें वहाँ पे pure white चाहिए. We need pure white there, so that's why we have to take another brush to blend it. We'll not blend it with the same brush. Okay, and here also we need to add here the shadow is little light. Okay, so I'm taking little bit of white in it. यहाँ पे हम ब्लर करेंगे with white. Okay, because this is little lighter shadow. Okay, very good. Okay, यहाँ पे ये कर देना है. Okay, and we are taking light gray and जो blue का हमने mix किया है, this one light gray and blue. ठीक है, and we are adding that color here. Okay, because यहाँ पे उसका shadow पड़ रहा है orange का. Okay, because here we get shadow of that orange. Okay, so that's why we are adding this little bluish shadow here. Here we are adding blue one. Okay, ये जो हमने blue का बनाया है, we have mixed blue, Persian blue, little bit of black and white. So I'm taking this shadow here. Okay, and we have to add this color here as well. Okay, हम उसके ऊपर से लेके जाएंगे. It is little bit grayish, so I'm adding more black. Okay, and we have to blend it properly. नीचे थोड़ा सा हाईलाइट के लिए छोड़ देना है. Okay, so it is coming till here. And we have proper shadow here. ठीक है, तो हम यहाँ पे और थोड़ा सा डार्क करेंगे. We'll add little bit of more black here because this is so just blend it. ठीक है,
यहाँ पे हमने ब्लेंड करना है और हमने ऑलरेडी वाइट ऐड किया है ना, नाउ इट इज हेल्पिंग अस, ठीक है। दैट साइड इट इज वेरी मच ब्लैक, थोड़ा सा इस तरफ करूँ क्या कैमरा, हाँ ओके। Okay, can you see it now? या ओके, हम ये यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया है। नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्लू शैडो, ओके, एंड वी आर एडिंग दिस ब्लू शैडो हियर। थोड़ा सा ये सिर्फ ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, शैडो हम पहले ऊपर की तरफ देंगे, then we'll add highlight, ओके ये हमने ऐड किया यहाँ पे, एंड ये जो ऊपर का है ये सब वाइट रहेगा, ओके। एंड दिस साइड वी नीड टू ऐड मोर डार्क, ठीक है। ये ब्लूइश ग्रे है, ओके, दिस इज ऑल ब्लूइश ग्रे एंड इट इज कमिंग टिल हियर, ठीक। ओके एंड ये यहाँ पे भी हम ब्लेंड कर देंगे। नाउ आई विल ऐड वाइट एवरीवेयर, ठीक है। अभी आई एम टेकिंग प्योर वाइट हियर इन द सेम ब्रश, ओके, सो विल ऐड वाइट हियर एंड blend it properly. वाइट ऐड कर दो, एंड ब्लेंड इट हियर, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना है। Pure white, we are applying pure white here and we'll just blend it, okay। तो उसमें क्या होगा, हमारे ब्रश में ऑलरेडी वी हैव लिटिल बिट ऑफ ग्रे इन अवर ब्रश, सो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ शैडो इनटू white and we get that perfect roundness, okay। yeah, white and just blend it, okay।
ब्लेंड करना है अच्छे से प्रॉपरली, blend it properly. Blend it. Blend. हम उसके ऊपर लेके जाएंगे, you know, फिर after that anyways we have to do it with blue line. So I'm just blending it everything. blend it अच्छे से blend करो यहाँ पे. गुड मॉर्निंग सारिका जी, गुड मॉर्निंग. राधे राधे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ओके या okay, and now we'll take Radhe Radhe Purnima ji, and here also we need to add white at the bottom. पहले white add करेंगे अच्छे से, then we'll blend it. Okay, then blend it, blend, yeah, blend it. ओके, वो वाइट से हाईलाइट होगा. ओके, अगेन जस्ट ब्लेंड इट, ब्लेंड करो अच्छे से. या राधे राधे श्रुति जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ओके, एंड नाउ विल टेक अवर फ्लैट ब्रश, बड़ा वाला. वेयर इज माय फ्लैट ब्रश? Okay, so good morning Sushma ji, good morning. Radhe Radhe, thank you for joining. Okay, now I have taken again our flat brush. Thank you Sushma ji, thank you for joining and thank you for sharing. Please बाकी सब लोग भी शेयर कर दीजिए. Thank you so much. See, this is my flat brush and यहाँ पे first we are blending the white part properly. Okay, we are blending the white part properly and after that we are slowly going on the shadow and shadow part. फिर यहाँ पे भी हमने अच्छे से blend कर देना है. Okay, because we need blending everywhere. यहाँ पे भी हमने blending चाहिए हमें. Yeah, okay, here it is very dark, so just blend it. Very good. ठीक है, ये हमने ब्लेंड किया है और इसके ऊपर अभी हम डिजाइन करेंगे ना, तो फिर हमें अभी सब कुछ फिर वो प्रॉपरली हमें पॉप आउट होगा. देन यू कैन सी द हाईलाइट एंड शैडो व्हेन वी गिव ऑल द डिजाइन्स हियर विथ ब्लू कलर. We'll blend it a little more to get that smooth finish. Okay, you have to blend it properly. अच्छे से blend करो. Yeah,
Okay. We have to show the shadow here, so that's why I'm pulling it. ठीक है. Okay. Now we'll take our round brush. Now we have to blend here also. Good morning, Deepa ji. Thank you for joining. Sushma ji, thank you. Thank you. And we have to blend it here. यहाँ पे तो हमने blend कर दिया है. We have to blend this one. Okay. Because we need pure white here. And we just have to blend it. And ये यहाँ पे dark है. Okay. And we'll add little bit dark here also. ये यहाँ का हम थोड़ा सा लेंगे यहाँ पे. Yeah. This is perfect. Okay. विथ वाइट दीपा जी हमने पर्शियन ब्लू एंड ब्लैक मिक्स किया है टू मेक द शैडो शेड. वी हैव मिक्स्ड पर्शियन ब्लू एंड ब्लैक, but more of a black, less of Persian blue. Okay. Yeah. And here we need to give blue lines. And यहाँ पे gray आ रहा है. Okay, we'll finish. First we'll finish table bowl, and after that we'll come to tabletop. Okay. अभी नहीं जाएंगे because हाथ रखने के लिए मुश्किल होगा. Okay. So we'll start with ब्लू. ठीक है. तो हमने सबसे पहले तो हमने लाइनर ब्रश लेनी है. वी हैव टू टेक लाइनर ब्रश एंड वी हैव टू स्टार्ट विथ आउटलाइनिंग द थिंग्स. देन विल एड द कलर. और व्हाट डू वी डू? आई गेस फर्स्ट वी हैव टू फिल द कलर, देन विल स्टार्ट विथ द लाइनिंग थिंग्स. Okay, so for that to fill the color we need to take ultramarine blue. Okay, yeah, gray plus blue, Persian blue. But now to make this flower and to fill the colors, now we are taking ultramarine blue. Okay, we have to take ultramarine blue, right? Ultramarine blue and little bit of white in it. हेलो मानसी जी, हेलो, राधे राधे. Thank you, Geeta ji. Thank you. See, I have taken ultramarine blue. Okay. And we need to add white to it. Okay. Which color, Rupali ji? Ultramarine blue तो set में आता ही है. What all colors you have in blue? If you have cobalt blue, then mix white with cobalt blue. Okay. आपने सेट ही लिया है ना? If you don't have ultramarine blue, then take cobalt blue. Okay. Because Persian blue से हमें outline करना होगा. See, I have mixed white with
सेट में आजकल अल्ट्रामरीन ब्लू नहीं आ रहा है क्या? आर यू नॉट गेटिंग अल्ट्रामरीन इन द सेट? यस, ऑयल कलर्स ही कर रहे हैं दीपा जी। रूपाली जी, कौन कौन से कलर ब्लू, कौन से ब्लू आए हैं सेट में, बताइए मुझे जरा। See, we have to fill this leaf with ultramarine blue. If you don't have ultramarine blue, then take cobalt blue with white. Okay? हम white और थोड़ा सा mix करेंगे. We need little bit of light ultramarine blue. See, this is the color. I have mixed white in ultramarine blue. ओके, कोबाल्ट एंड पर्शियन ब्लू। अच्छा, मुझे ज़रा कोई प्लीज़ व्हाट्सएप पे ये सेट का पिक भेज दीजिए ना। आई वॉन्ट टू सी द कलर्स। यू नो, इन recent times I have not purchased set. Okay, I always purchase loose colors. But it doesn't matter if you don't have ultramarine blue, then you can take cobalt blue and white. Okay. Acha. Then what are the 12 colors in the set? Okay. What are the 12 colors? Because येलो में 3 शेड आ जाते हैं, लेमन येलो, येलो ऑकर एंड कैडमियम येलो और क्रोम येलो, राइट? बर्न्ट अम्बर भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, तो कौन से कलर्स दे रहे हैं एज अ सेट ऑफ 12? बिकॉज these colors are mandatory colors: ultramarine blue, cobalt blue and Persian blue. It's okay if you don't have burnt umber, you can mix black with burnt sienna. If you don't have orange, you can mix yellow and red. But blues तो होने चाहिए. Okay. वीना जी, आप मुझे थोड़ा सा सेट का पिक भेज दीजिए ना, इफ इट इज पॉसिबल, या कोई भी भेज दो, एनीबडी प्लीज। सो वी नीड टू ऐड Persian ultramarine blue and white. Okay. And if you don't have ultramarine blue, don't worry, you can add cobalt blue and white. Okay. Yeah, okay, like this. Thank you, Veena ji, thank you. You got oil painting brushes, no? How about your canvas? Canvas, is it fine grain or medium grain? If it is medium grain, then you have to add 1 coat of
white color, acrylic white color on the canvas, because canvas medium grain का जो होता है, it is not that smooth, so that is not good for oil painting and oil painting brushes. We need smooth surface. This canvas is fine grain canvas. Okay, thank you Vinaji, thank you. I'll have a look after the class. Because as of now in free classes I am not taking any color which is not in the set. I thought it will be there in the set, ultramarine blue, because free class के लिए इतना investment करवाना ठीक नहीं होगा. So that's why I'm taking all the colors. I assumed क्योंकि ultramarine blue तो आता था, because you cannot make ultramarine blue, and to if you want purple color or violet color, ultramarine blue is a must, क्योंकि violet के लिए if you add more blue in crimson, with crimson you get violet, and if you add ultramarine blue and more crimson, then you will get purple. If you add more blue, then you will get violet. तो ultramarine तो होना चाहिए. Okay, and this is our main flower. Yeah, then you can use cobalt. Okay, Kanchanji, I hope your paints are fresh. अगर फ्रेश नहीं है तब भी वो इतना स्मूथली मूव नहीं होता है. ओके, एंड इट कैनवस, इट डज मैटर. ओके, कैनवस का जो मैंने वीडियो बना के भेजा है, आई होप यू हैव सीन द Lindsay ji, it all depends on your experience na. That's what I was telling you, ki you have to make 100 paintings in each color, okay, in each medium, then you'll come to know, your eyes will get trained na, ki which color is this, what color to use. शीला जी, आई एम यूजिंग कैमल वंस, कैमल सेट जो आता है. Not, I don't have set, but I use camel paints only. See, these are my colors. But you have to take artist oil colors. Okay, artist acrylic का भी हो या oil का भी हो, you have to take artist ones. Otherwise, you get student paints also. Okay, but take to get good experience na, you have to purchase little bit of, we are not going for Winsor and Newton paints or Pebo paints. Here we are using only camel paints, so go for artist colors. And set, I guess 700 या 800 में set आ जाता है, so it is better to go for artist colors. Okay, and canvas, definitely it does matter. You have to take fine grain canvas, and if you are taking in roll. Okay, yeah, Lindsay ji, because it all depends on your experience. No? Then dhire dhire you'll come to know, after so many paintings you'll come to know, you'll analyze ki okay, by seeing only you have to train your eyes. That's what I was telling you yesterday also, ki
put some apples on the table and see where is highlight and where is shadow. And Lata ji is a good student. She did the homework yesterday and she sent me a picture also. She kept one apple on the table and she saw ki where is shadow, where is highlight. So you have to send me, na, Shruti ji, Simmi ji. Then only I'll come to know. She sent me the picture. Okay, so that's how you have to train your eyes. Okay. She kept one apple on the table, and she sent me where is shadow, where is highlight. I was so happy. And same thing, after analyzing light and shadow, you have to analyze the colors. Okay, then you start playing with the colors. Hello Shruti ji. See, here in oil painting you have to wait. You have to wait to it painting should get dry, and after that you can rectify the mistake. Otherwise in acrylic what happens, it dries faster, so you can rectify then and there. But in oil painting, if you make some mistake, then let's say हमारा यहाँ पे कुछ लग गया, okay, say here we have to apply brown color, right? Background is brown है हमारा, but blue लग गया, let's say. Then what is the option? You have to take some rough cloth and just you try to take off the extra paint, but still you can see blue thing here. You have to wait for, because extra paint is like we have to take out extra paint and you have to wait for some time. Then after that, wait for some time in the sense you have to leave it for at least one hour. Okay, 1-2 hours तो आपको छोड़ना पड़ेगा, and after that you can paint it, repaint it. ठीक है? Okay, and here see there is no place to put my hand, so I'm taking one hand for my support and putting my another hand on this hand. Okay, I'm taking support of my another hand. Or we can use one stick also, but ये छोटा पेंटिंग है, इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा. This is very small painting, just 16 by 20 inches, so you don't need to use that stick and all. You can take the support of your hand only. Okay. Okay. या वो भी ले सकते हैं, टर्पेंटाइन और लिंसीड ऑयल. So idea is to take off extra color, extra paint, then but after that also, if you use linseed oil, after that also you have to leave it for some time, then you can rectify it again. But don't use turpentine on the canvas. Okay.
या बिकॉज टर्पेंटाइन का काम क्या है, वो फेड करने का काम है, कलर को फेड कर देता है. वंस यू यूज टर्पेंटाइन ऑन द कैनवस, then when you apply other color, it fades that color also. So don't use turpentine on the canvas. Turpentine is just to clean your brushes, that's it. There is no other work for turpentine. Okay, and somebody was asking about cleaning the brushes. Now see, I have started these leaves on the first day. Okay, है ना, हमने लीव्स कब स्टार्ट किया था? थैंक यू श्रुति जी, थैंक यू. ये या ओनली ऑन द ब्लैंक कैनवस. ये हमने फर्स्ट डे स्टार्ट किया एंड सेकेंड डे हमने ये किया बाकी लीव्स. एंड आई हैव केप्ट दिस लीव फॉर, आई टोल्ड यू yesterday only, I have kept this leaf for my reel. रील का एक अलग ही चल रहा है. ओके, सो आई विल यूज, आई हैव नॉट वॉश माई ग्रीन ब्रशेस. आई वॉन्ट टू से आई हैव नॉट वॉश्ड माई ग्रीन ब्रशेस. दे आर हियर एंड आई विल फिनिश this leaf, and after that I will wash. So it is like it's been this is today's third day, but my brushes are still wet only. Okay, they are not that hard. Okay, हाँ. So that's how you can keep your brushes. But I have washed, like वॉश करने के लिए दे दिया है. आई डोंट वॉश माई ब्रशेस, तो मैंने दे दिया दिस रेड वंस ना, उसका काम खत्म है. सो माई रेड ब्रशेस आर वॉश्ड नाउ. ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू मेंटेन. ओके, सो वी हैव टू लाइक यहाँ पे या यहाँ पे है. ओके, आई एम अप्लाइंग these colors here. यहाँ पे कुछ है एंड ओके. And we have to we have something here. Okay, okay, and एक यहाँ पे है like this, one more here. दिख रहा है ना आपको? या like this. Okay, and after that we'll give outlines with Persian blue. Okay, yeah, one here and one here. Okay. We have one more here. यहाँ पे भी कुछ है. Okay. Sheila ji, if you purchase fresh colors, let's say if you purchase fresh colors, then you don't have to use oil. Okay, स्पेशली फॉर वाइल वी आर वर्किंग फॉर ब्लेंडिंग. अगर हम कहीं पे ब्लेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे.
ओके। अगर आपके कलर्स पुराने हैं, ठीक है, इन दैट केस you have to add little bit of oil. Like for example here, now I'm going to make some lines. So in that case we have to add oil to it to make the lines, okay? And as you can see, this my ultramarine blue is very fresh. You can see oil is flowing here. So you don't have to add oil to fresh colors because it is already in there, okay? ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक आ रहा है, ओके। वी हैव वन लीफ हियर, यहाँ पे भी है। ऑयल, लिंसीड ऑयल, इसको जो हम ऑयल कलर्स में जो यूज करते हैं उसको लिंसीड ऑयल बोलते हैं, ओके। The oil which we use in oil painting, that is called linseed oil. You get camel linseed oil, okay, and you get फिर अलग अलग कंपनी का भी होगा, but generally I use camel. All my colors, oil, and you know whatever is there, I generally prefer camel ones, okay. Because they are good enough. Brushes also for acrylic colors, camel brushes are best. Sometimes I use Brusto and domes also, but camel brushes are best. Chitra ji, you don't have to use anything. If your colors are fresh, I'm telling you again and again, if your colors are fresh, then you don't have to use anything, okay? And you get fast drying oil, that this. No, you don't have to use anything. We are working in oil so that we get more time to blend, okay. If you are in a hurry, then go for acrylic. Okay, and we have something like this. यहाँ पे dark होगा, so I'm taking direct ultramarine blue here, because we have already applied gray in the bottom, so in the first layer, so now it is like थोड़ा सा light तो हो ही जाएगा, okay. Yeah, so now I will take Persian blue. We have to give outline with Persian blue, okay. Persian blue, and you know, as a beginner you don't have to take all those things. वो सब ना उनको चाहिए, प्रोफेशनल्स जो ऑर्डर वर्क पे करते रहते हैं, फटाफट चाहिए उनको, है ना. they want oil painting only, but they have to complete their work within a timeline.
So for those people they take all those things because वो time bound होता है, वो सब होता है. So generally oil painting का what I do, I'll take lot of time from the client if they want oil painting, and for acrylic तो I'll do it फटाफट करके मैं दे देती हूँ. But if they are ordering for if they want oil painting, then I ask them to wait. Okay. सी ऐसे आपको लाइंस देना है. ठीक है, क्योंकि अभी मैं इस जब लाइनर ब्रश से काम करते हैं पूरा उसमें घुस के काम करना पड़ता है. सो कैमरा में बहुत अजीब लगेगा. आई एम जस्ट गिविंग द लाइंस. ओके, वो भी मैं just you have to give the lines. Okay, so I'm not doing that because it will take a lot of time. We are just giving the outline here. Okay, like this we have to finish this flower and lines जो भी जहां पे भी दिख रहा है. Okay, so we'll do this ये वाला design. Okay, and you also please finish this lining wala thing. Okay, I'm not doing in the class, it will take a lot of time, and it is just the line. We can see the lines. Okay, as we can see the lines, we have to give lines with the Persian blue. That's it, nothing much. Okay, because यहाँ पे ऐसे हाथ रख के ये सब करना है and कैमरा में वो सब अजीब लगेगा. ठीक है. Okay, so this is also same way we have to give it with the lines and we have to give the design. That's it. ठीक है. शीला जी, इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 days. ठीक है, 2-3 days. जैसे हमारा ये ग्रेप्स हमने फर्स्ट डे किया था, टुडे इज थर्ड डे, बट दिस इज लिटिल बिट वेट. कैन यू सी, थोड़ा सा हमें हाथ पे आ रहा है कलर. ओके लिंसी जी, बिकॉज you can blend it, it gives more time to blending and all. Okay, those people who love blending, those who love smooth paintings, like I love smooth paintings. Okay, so I want to blend it properly. If you work the same thing in especially grapes, so you can do it. Okay, fatafat, because the area is small. But for oranges, as you can see, first we have applied orange, yellow, white, and this side it is burnt umber and yellow. By the time you finish orange part, and if you start burnt sienna, orange part will get dry. Okay, you cannot mix it properly. In oil, that is the advantage. You can mix it, aram se you can mix it. That's the thing. That's why people prefer oil painting. Okay, and one more thing, in initial time means like Asian times, जो हमारे legend artist है. Okay, in those times only oil paints were available, not acrylic तो बहुत recent वाला है. Okay, so that's why oil painting is like, you can say that those classic oil paintings, because at that time they used to get only oil paints. Okay, ठीक है. ये लाइनिंग वाला काम मैं अभी कुछ नहीं करूंगी. आई विल नॉट डू एनी लाइनिंग वर्क बिकॉज आई हैव टू प्लेस द हैंड एंड डू इट लाइक दिस. वो कैमरा में आई एम जस्ट गिविंग द डिजाइन. दैट्स इट. वी हैव टू गिव द आउटलाइन. आई हैव शोड एवरीथिंग एंड वी हैव टू गिव आउटलाइन विथ पर्शियन ब्लू. ओके,
इनसे जी यू कैनॉट मिक्स ऑयल एंड एक्रेलिक, मतलब यू कैन इन द सेंस कि मतलब यहाँ पे एक्रेलिक कर दिया, यहाँ पे ऑयल कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू वांट टू गिव दैट, इनिशियली आई हैव मेंशन्ड दैट इफ योर कैनवस इज medium grain, then you can apply one acrylic white coat. Okay, once it is dried, then you can paint oil colors on that. Okay, but you cannot mix, like mix in the sense like mixing, you cannot mix like that. Okay, wood piece nahi, wood piece pe to you cannot do, only that is very smooth surface, you cannot do. Surface ka process is little different, because you have to apply acrylic coat on the MDF board with the sponge. We need little bit of texture na, canvas के ऊपर थोड़ा सा texture होता है. Okay, so we need that texture. I'm taking blue, ultramarine blue, and we have to give this one broad line here with ultramarine blue. Okay, here I am giving with ultramarine blue. After applying gesso, yes, you can do it, but it is preferable to do it on canvas. Okay, and on gesso and all, you can use acrylic colors. Okay, I'll share the picture once it is done. Okay, we have to give a line here also. Okay, yeah, we'll start with the tabletop. Okay, for that we need to take burnt umber and white. Okay, we'll start with the tabletop. Okay, burnt umber. Okay, burnt umber and white. What information you want, Bhavya ji? Okay, I'm mixing white and burnt umber. I will take burnt umber and white. क्या हुआ? ग्रेप्स कलर, ग्रेप्स कलर दैट इज स्कारलेट भी है, क्रिम्सन भी है. For highlights we have used blue, grey, white. You watch part 1, Shilaji, then you will come to know we have done grapes in part 1. Okay,
भाव्या जी, teak and all those are very smooth finish वाला wood होता है. You cannot make paintings on wood with oil. If you want to work with acrylic, you can go for first do the gesso and after that you work with acrylic ना उसके ऊपर. Why do you want to do oil on wood? Yeah, loose oil paints बहुत सारे मिलते हैं. You get lot of colors. That is set तो for beginners to start with basic colors. After that you get lot of colors. Okay, बहुत सारे. And concentrate on the painting. ठीक है, अब देखो यहाँ पे what's happening today? क्या हो रहा है? थोड़ा सा या सी, ये जो है ये वाला, दिस इज द फ्रंट ऑफ द टेबल, दिस इज लिटिल बैक साइड ऑफ द टेबल एंड दिस इज टेबल टॉप. ओके, ये उस टेबल के ऊपर हमारा बाउल एंड फ्रूट्स रखा हुआ है. ओके, सो हियर इट इज burnt umber and white. Okay, here I have taken hog brushes because यहाँ पे हमने फटाफट just we are applying the color and after that we'll take one broad brush and we'll smoothen it. Okay, ठीक है. burnt umber and white. If you don't have burnt umber, then what you have to do? Add black to burnt sienna. Okay. ओके, ये हमारा लीफ है एंड वी हैव टू शो द शैडो. शैडो वो अलग कलर से हम करेंगे. सो दिस इज बर्न्ट अंबर एंड वाइट. ओके, दिस इज टेबल का फ्रंट साइड. एंड टेबल का भी ऐसे ही. लुक एट योर डाइनिंग टेबल. Okay, then you'll come to know what I'm talking. This is front side of the table. Thank you Sheila ji. This is top side. ये जो पीछे का होता है ना, नीचे वाला. So that is okay. Look at the dining table. Today look at the dining table. That is your homework. And look at the color. किसी के पास डार्क कलर ब्राउन जो होता है, डार्क ब्राउन, दैट इज बर्न्ट अंबर. एंड किसी के पास लाइट ब्राउन वाले टेबल होता है, दैट इज बर्न्ट सियाना. ओके, एंड किसी के पास ब्लैक होगा. डाइनिंग टेबल, आई एम टॉकिंग अबाउट डाइनिंग टेबल. सो लुक एट द शेप फर्स्ट. यू विल गेट टू सी 3 parts and look at the colors. Okay, you have to train your eyes. कलर्स देखने के लिए, शेप देखने के लिए. Here I am using hog brushes. Okay, because here we are not giving any shape or something, so that's why we are using hog brushes.
एंड लता जी तो सुपर फास्ट एंड उनका पेड क्लासेस में भी सब काम फिनिश किया उन्होंने और फ्री क्लासेस का भी फिनिश किया. शी इज सुपर फास्ट एंड गुड स्टूडेंट. टीचर्स को ऐसे वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, है ना. आई एम श्योर टीचर्स इन द हाउस दे अंडरस्टैंड. सी हॉग ब्रशेस आर यूज्ड फॉर बैकग्राउंड. ठीक है, यहाँ जब हम बैकग्राउंड करेंगे, ये जो बैकग्राउंड करेंगे, फॉर दैट ऑल्सो वी आर यूजिंग हॉग ब्रशेस एंड फॉर टेबल ऑल्सो. हाउ डू वी डिसाइड? बिकॉज हियर वी हैव टू ब्लेंड ऑल द कलर्स. ओके, यहाँ पे हमने बहुत सारे कलर्स मिक्स करने हैं. सो वी नीड सॉफ्ट ब्रिजल ब्रशेस हियर ऑल्सो. यहाँ पे भी हमने व्हाइट और ग्रे मिक्स किया. And in oranges we have mixed orange, yellow and all those colors. So you can say this is background. ठीक है, ये background हो गया, ये subject हो गया, जो भी हमारा subject है. ओके, grapes हो गए, I mean fruits हो गए, flowers हो गए, whatever is that is called subject. This is background. And generally ये table पे ये oil जो होता है, you know, plain color. Here we are not using any other color, and if we use also, we use little bit of white, and we need rough. We don't need any proper blending here. We need just rough color. So at that time you can use hog brushes. Okay, but whenever you are working on portraits में face, hands, body के ऊपर, okay, okay, we are working on the front side of the table. okay, आज टेबल को ऑब्जर्व करना और फोटो भेजना मुझे. I'm working this side. ठीक है, एंड जो हमने लेमन पॉट्स एंड बुक्स का एक पेड क्लास किया था, उसका टेबल तो इतना सुंदर था, बहुत अच्छे से किया था हमने. दैट वाज लिटिल टेक्सचरी इफेक्ट. वी वर्कड इन एक्रेलिक. okay, so we are just blending it. and ये नीचे का जो है यहाँ पे डार्क रहेगा. ओके, डार्क रहेगा. so I am taking burnt umber directly. okay, I am just taking burnt umber directly in the same brush. okay, you don't have to change your brush. यहाँ पे हमने डार्क देना है. क्यों डार्क देना है? क्योंकि टेबल के एकदम नीचे वाला जो हिस्सा होगा दैट इज डार्क. ओके, here this is exactly below the table. okay, so here it is little dark, little, not little dark, more dark, proper dark. so that's why I'm taking burnt umber directly, full burnt umber. okay, proper burnt umber. I have not mixed anything because we have to show the darkness under the table. okay, उन्होंने कुछ, लता जी ने तो बिल्कुल जो भी पेड क्लास है पेड क्लास, फ्री क्लास है फ्री क्लास, सारा ही सारा पेंटिंग बनाया उन्होंने. वेरी गुड.
and she's very serious about her work, so that's why एप्पल का भी फोटो भेजा उन्होंने. That's how you have to train your eyes, okay? And eye and hand coordination. फिर कलर कौन सा कलर होगा, यू हैव टू थिंक. सी, बाहर की दुनिया में तो कोई भी कलर हो सकता है, एंड यू हैव टू थिंक कि ओके दिस मस्ट बी अल्ट्रामरीन ब्लू और बर्न्ट अम्बर. अभी ब्राउन में भी मैंने अभी 2 शेड बताया ना, जो लाइट वाला जो होता है लाइट ब्राउन, that is burnt sienna. So you have to identify the colors, okay? Common language में it is called light brown, but you have to say burnt sienna like that, okay? I'm taking burnt umber और थोड़ा सा खत्म हो गया मेरा. क्या हुआ सिमिजी, लॉन्ग हैंडल ब्रशेस एंड शॉर्ट हैंडल ब्रशेस. सी, अभी आपने देखा ना, सी आई हैव टू गिव दीज लाइन्स, है ना, एंड आई कांट पुट माई हैंड ऑन द कैनवस एंड डू इट, ओके. फॉर दैट वी नीड लॉन्ग हैंडल ब्रश, मतलब हम दूर से ही हम उसको कर सकते हैं. एट प्रेजेंट मेरा लॉन्ग हैंडल लाइनर ब्रश कहीं अंदर है, सो आई हैव टू टेक इट आउट एंड डू दैट, ठीक है. So that's why you need long handle. जैसे ये भी मेरा long handle है, so that I can do it like this. You don't have to, like oil में main क्या होता है, you cannot put your hand for each and everything, okay? जब हम ये कर रहे थे, it is all empty, so we can put our hand on this. But now it is, we are filling it up, so you cannot put your hand on the canvas. So that's why you need to use long hand. जैसे ये मेरा long hand है, okay? So I can, without putting my hand or something, we can do it like this. दूर से ही कर सकते हैं. So that's why we need long handle brushes for oil painting. You don't need to use long handle brushes for oil painting, acrylic, because acrylic का तो dry हो ही जाएगा. Then you can put your hand. So that's why initially, so for oil painting we need long handle brushes. लाइक अभी देख रहे हैं ना, जस्ट मैं यहां दूर से मैं कर रही हूं. हॉक ब्रशेस, माई हॉक ब्रशेस आर लॉन्ग हैंडल ब्रशेस, ओके, लाइक दिस. वी डोंट हैव टू पुट अवर फिंगर, हैंड और समथिंग, करते करते हम ऐसे रखते हैं ना, रख के करते हैं. सो दैट्स द थिंग. या हियर इट इज वेरी मच डार्क, एंड आफ्टर दैट इन द बॉटम अगेन आई एम यूजिंग white to make it light, okay. Yeah, as a beginner you can wait, है ना, you can wait and let it dry, and after that you can give the lines here. Okay, ये हमने burnt umber दे दिया है. Sometimes we use stick, okay, लेकिन if we are working on a big canvas then we need stick also. Okay, and till here I have given dark brown, that is burnt umber,
okay, because this is just below the table, and just below the table it is always dark. Now I'm taking white again. White खत्म हो गया है. ये छोटा पेंटिंग है, इसके लिए स्टिक की कोई जरूरत नहीं है. ओके, take white and take little bit of burnt umber. Okay. Yeah, so we have to finish this thing like this. Okay, and just merge it properly, blend it. Okay, और ये जब हम टेबल टॉप का जो अभी हम करेंगे, then you can see the table. Okay, yeah, one more thing I want to announce something. वो 18 दिसंबर से मेरा पेड क्लास ऑयल पेंटिंग स्टार्ट होने वाला है. I'm launching oil painting, which is starting from 18th December. Okay, those who want to join this painting, please join, and those who are in my WhatsApp group, they will get 20% off on the fees. This is the painting. ठीक है, ये वाला पेंटिंग हम बनाने वाले हैं. This is a paid class which is starting from 18th December. Look at the flowers. These are orchids. Bamboo भी हम सीखेंगे, stones, light. Okay, candle का जो flame जो आ रहा है, flame के आसपास जो भी आ रहा है, and we learn all these things. Okay. And those who are in my WhatsApp group, they'll get 20% off on the painting. Okay, fees. And I will send all the details in WhatsApp group. Okay, please do join. और भी अच्छे से करेंगे हम. And I am planning so many paintings. This is my last free workshop in this year 2024 में, and we'll start with thank you Deepa ji, thank you. Okay, and we'll start with bottle art वगैरह सब करेंगे फ्री क्लास में in January. वो सब तो मैं डालूंगी, धीरे धीरे डालूंगी. I will announce everything, each and every class, but it is this painting is starting from 18th December. I hope you will join me and I will see you there. ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल सा पेंटिंग है. दिख रहा है ना आप लोगों को, है ना? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. ओके, बहुत अच्छे से आएगा. एंड आई एम कीपिंग दिस बिग साइज ओनली. ठीक है, अच्छे से बड़ा साइज ही करेंगे हम, so that you get the feel of big size painting also. And fees is very minimum. अगर आप बाहर किसी और के पास देखते हैं, ऑयल पेंटिंग इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ओके, बट आई एम चार्जिंग वेरी minimum fees, and that to those who are in my WhatsApp group, they'll get 20% on the whatever fees I quote. Okay,
या ठीक है, हम कल मिलते हैं. विल स्टार्ट टुमारो अगेन. विल फिनिश दिस टेबल टॉप. ओके, टेबल टॉप फिनिश करेंगे एंड बैकग्राउंड फिनिश करेंगे. ओके, बैकग्राउंड फिनिश करेंगे एंड टेबल टॉप फिनिश करेंगे. ओके, यस, रिकॉर्डिंग तो रहेगा. रिकॉर्डिंग का तो आप रिकॉर्डिंग, इट विल लाइफ टाइम एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड विल कंडक्ट ऑन प्राइवेट ग्रुप, फेसबुक प्राइवेट ग्रुप. ओके, एंड इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो. प्राइवेट लिंक्स रहेगा उसका. ओके, एंड लाइफ टाइम एक्सेस एंड आई विल सेंड ऑल द डिटेल्स in WhatsApp group. Okay, and those who are in my WhatsApp group, they'll get 20% off. Okay, otherwise oil painting is very costly. You people also, you know everything. Okay, and I charge very minimum fees. Okay, thank you so much for joining. See you tomorrow, and tomorrow will be our, I hope tomorrow I'll be able to finish this painting, क्योंकि ये सब तो, ये दोनों तो मैंने बताया है. This is for my reels. Okay, I should have kept one grape also for my reel, है ना. ये आजकल रील का जमाना है, you know. वो एक अलग ही चल रहा है. Neha ji, if you are in my WhatsApp group, I'll send all the details in WhatsApp group, and those who are in my WhatsApp group, they'll get 20% off. Okay, on whatever fees I charge. Okay, please do join. वहां पे और अच्छे से और भी करेंगे, और भी शेड्स बताऊंगी. यहाँ पे तो मैं जो हमारे किट में है, आई एम ट्राइंग टू यूज ओनली दोज कलर्स, दोज कलर्स विच आर अवेलेबल इन द किट. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ओके, बाय.